হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মিষ্টি সিং আর আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। Mananiya Mantri, Minister in Charge, Department of Labour and Transport, Government of West Bengal, Shri Arjun Singh, along with former IPS and member of Legislative Assembly, Dr. Rajesh Kumar, along with Mr. Devdatta Mukherjee, Chairman and Managing Director, Merkstone International Private Limited, Mrs. Shonali Mukherjee and Mr. Tathagata Mukherjee, Directors of Merkstone International Private Limited, Mr. Sitanan Asarasi, Chairman and MD, Asara Electric Company Limited. कोलकाता 29 जुलाई। भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में सबसे अहम इंडो थाई मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन में से एक में कोलकाता में हेडक्वार्टर वाली मर्कस्टोन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मर्कस्टोन ईवी और थाईलैंड की असारा इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड ने बुधवार को लगभग 250 करोड़ रुपए के प्रस्तावित फेज्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। कंपनियों की लंबे समय तक पूरे भारत में विस्तार की स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पश्चिम बंगाल में बनाई जाएगी। इस मौके पर कंपनी के फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर को औपचारिक रूप से वित्त मंत्री डॉक्टर स्वप्न दास गुप्ता, पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम और परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अर्जुन सिंह, साथ ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, इंडस्ट्री लीडर्स और एक इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेशन की मौजूदगी में पेश किया गया। मुखर्जी, उत्तरीय मिस्टर सिटिनान आसारासी एवं Mr. Sitaram Asarasi, Chairman and Managing Director, Asara Electric Company Limited, and Mr. Tiratawat Shainan, our esteemed guest from Thailand. আর তার সাথে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত এদেরকে অনুরোধ করলাম তারা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে by lighting the auspicious lamp, let's mark a beautiful beginning of collaborative spirit. Is there which beckons, and together I think this partnership can lead us to many more exciting ventures. Thank you. Digital LED display, lithium and iron phosphate battery technology, lead acid graphene battery option, fast charging capability, long riding range, electronic assisted banking system, waterproof motor technology, advanced thermal management system. এখন তো দেখছেন টু হুইলারে নিয়ে এই যারা হোম ডেলিভারি যারা যে kompany-গুলো করছে এদের তো মার্কেট খুব ভালো আছে, তো এই জন্যে এই কাজটা খুব ভালো কাজ করে।ผมสิทธินันท์อัศราศรีนะฮะจากบริษัทอัศราอิเล็กทริกคอมพานีครับซึ่งวันนี้เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทางพาร์ทเนอร์เราได้ทำการเปิดตัวค่อนข้างยิ่งใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ประเทศอื่นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยเจอการต้อนรับแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางมิตรจรซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานนะฮะขอบคุณมากๆสำหรับการต้อนรับของทางอินเดียนะครับขอบคุณมากครับ We believe in September we will fully manufacture from Calcutta, from West Bengal,
September onward, and our production capacity is annually not less than 40-50,000. But to start with, we will generate 10-15,000 to start with to survey the market and the acceptability of the market. And we are far ahead from the competitors' company, because basically what happened, apart from 4-5 big brands like who are existing for last 30-40 years, basically this industry is still unorganized sector. People are just importing few products, people are procuring few products here and there and sell it. But we are trying to establish as a organized segment, so that we can regularize our basic need of the commuters, and we can analysis the competitive price, and lot of things is there. We have three models. Number one is basic जो vanilla business है, B2B, B2C. Number two, after that, our plan B is some sort of social responsibilities thing, because today Swiggy, Zomato, like lot of delivery companies are there, and lot of young educated people under 18 to 26, they are from needy family. If they have a two-wheeler, they can easily earn 25-30,000 as a delivery person. तो है कि 25 तक सीमित, जो कि गवर्नमेंट का जो अप्रूवल जो नॉर्म्स है कि if your speed is limited to 25 kilometers per hour, you don't need to register, you don't need to this thing, insurance, helmet, all this. But we insist to wear helmet. May it be 10 speed, may it be 25 speed. We insist. कोलकाता में कब तक लॉन्च हो रहा है? Kolkata mein this is the launch. If you want tomorrow, we can give it to you. Already we have enough stocks, but commercial production will start from September. If you ask for 2,000 piece, then you have to wait for September. If you ask for 400 piece, 500 piece, I can provide you tomorrow itself.